Hello and welcome to the tech city of India. Bangalore is where we are, and it's a big day for Indian hockey. It's the Hockey India second annual awards for 2015, and you're watching this live telecast coming your way, as I said, from the tech city of Bangalore. I'm Raman Banot, and this really is a big moment. The annual awards that Hockey India have organized. This is, remember, the second edition. We saw the first edition last year. That was awards given out for 2014 for performances, great performances that we've seen from Indian hockey sportsmen. And I think it's a huge fillip to the sport, a great initiative by Hockey India and their executive board, a great initiative by Dr. Narendra Dhruv Batra to initiate this. And I think it's just appreciating and acknowledging the performance of hockey players of India, both men's and women's, who've done exceedingly well. Remember, 2014 was a good year for India. When you look back and you say, great, a gold at the Asian Games, a silver at the Commonwealth Games in Glasgow. 2015 was better as well, because after a long period of time, almost 33 years, it was a long wait before India managed a medal at an FIH event. Roland Oatman, well, I'm sure he'd be a proud man, the director of hockey and the high performance director for the Indian team. Right now with me in the studio, I have a special guest, and it's Birendra Lakra. Birendra, बहुत-बहुत स्वागत आपका. पिछले साल प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया था आपको हॉकी इंडिया के एनुअल अवार्ड्स के अंदर, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद इस दूसरी एडिशन के लिए. क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी. पिछले 2 सालों के अंदर मैं बात कर रहा था जिस तरह से भारतीय हॉकी मेंस टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रही है. आप 2014 की एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, या 2015 में वो FIH इवेंट की जहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही भारतीय टीम, और आप उन तीनों टीमों का हिस्सा थे. पिछले 2 साल से टीम ने काफ़ी इम्प्रूव की है, चाहे आप देखें फॉरवर्ड लाइन में या डिफेंस लाइन में. तो जो भी हम लोग का गलतियाँ होती है मैच के दौरान, तो हम लोग उसके बाद बैठ के काफ़ी उसके ऊपर काम करते हैं, ताकि नेक्स्ट मतलब मैच आने वालों में हम वो अपना गलती सुधार सकें. और यही एक वजह है कि जो हम लोग गलती करते जा रहे हैं उसको फिर हम लोग सुधर रहे हैं, और हम लोग टीम के साथ जुड़ के अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं. भारतीय टीम में पिछले 1.5-2 साल में एक बहुत ज़बरदस्त मिश्रण देखने को मिल रहा है. वीरेंद्र, एक्सपीरियंस है, सरदार सिंह जैसे टीम के कप्तान लीड कर रहे हैं, रमनदीप हैं, और फिर साथ साथ आपके पास युवा खिलाड़ी हैं, वाल्मीकि की तरह, देवेंद्र वाल्मीकि की तरह. तो अच्छा मिश्रण लग रहा है, बैलेंस लग रहा है यूथ और एक्सपीरियंस का. हाँ, देखा जाए तो यूथ और एक्सपीरियंस का काफ़ी बैलेंस है, क्योंकि जैसे यंग प्लेयर है, टैलेंटेड हैं, तो वो टीम में जैसे सरदार सिंह हैं, श्रीजेश हैं, रघुनाथ हैं, तो जूनियर प्लेयर्स जो हैं उनको देख के उनके मोटिवेट होते हैं. तो फिर मोटिवेट होने के बाद खुद वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, जो भी सीनियर प्लेयर हैं उनके थ्रू से. और भारतीय हॉकी के अंदर एक बार फिर वीरेंद्र वो फ्लेयर दिख रही है, उस तरह की अटैकिंग स्पिरिट दिख रही है जिसके लिए भारतीय हॉकी जाने जाती थी. और 2-3 ऐसे युवा खिलाड़ी आए हैं इस टीम के अंदर. आकाशदीप की बात करें, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो भी देते हुए भारतीय टीम के लिए. वो यंग प्लेयर हैं आकाशदीप सिंह, और काफ़ी स्किल है, वो स्किलफुल है, टैलेंट है. तो एक अच्छा फॉरवर्ड है हम लोग के पास, कि मतलब कोई सा मोमेंट में वो अपना स्किल के वो माध्यम से वो अपना वो परफॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं टीम के अंदर जो कि किसी भी मोमेंट में मैच को किसी भी मोड़ पे वो ले आ सकते हैं. और बैकलाइन जो डिफेंस चाहिए, जो भारतीय टीम का कई बार टाइम मोमेंट्स के अंदर अंडर प्रेशर आता है, और उसके एक मेन स्टे आप खुद रह चुके हैं. तो बैलेंस अच्छा लग रहा है टीम के अंदर. हाँ, अभी बैलेंस अच्छा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग खेल रहे हैं. रुपिंदर पाल सिंह, रघुनाथ, मैं, और साथ में हम लोग को सपोर्ट करते हैं श्रीजेश. तो हम लोग अभी 2-3 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो और प्रेशर जब भी प्रेशर होता है तो वो अच्छी तरह से रिलीज कर पाते हैं. भारतीय मेंस हॉकी के अंदर एक नई दीवार है, और वो गोल के सामने श्रीजेश हैं. जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है पिछले 2-3 साल के अंदर, मतलब आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स आज की डेट में इंटरनेशनल हॉकी में, और सब लोगों का ये मानना है. हाँ, नो डाउट वो अच्छा परफॉर्म कर आ रहे हैं पिछले 2 साल से. और ये है कि जब भी अगर डिफेंस से कोई गलती हो जाती है तो यही लगता है कि
चलो गलती हो गई, बट उम्मीद रहता है श्रीजेश तो है। पीछे श्रीजेश हैं वो गोल सेव कर लेंगे, तो उसमें और कॉन्फिडेंस मिल जाता है डिफेंस लाइन को। और मैं एक बार फिर इस बात को हाईलाइट करूंगा, अगर आप उस मुकाबले के ऊपर दोबारा नज़र डालेंगे जो रायपुर में खेला था भारतीय टीम ने नेदरलैंड्स के खिलाफ, क्या कांटे की टक्कर थी वो ब्रॉन्ज मेडल मैच जो था। 5-5 रेगुलेशन टाइम के अंदर फिर आप शूट आउट में जा रहे हैं, वहाँ पर भी श्रीजेश का दबदबा गोल में, किस तरह से उन्होंने वो इफेक्टिव बहुत ज़बरदस्त सेव्स किए थे जिसने भारतीय टीम को बना रखा था। हाँ, वो मैच बहुत ही रोमांचक रहा था हम लोग के लिए। इवन जितना भी सपोर्टर्स थे सारे सारे काफ़ी चेयर किए हम लोग को। हम 2-0 डाउन होने के बावजूद भी जो टीम है काफ़ी अच्छा कमबैक किया। इवन शूट आउट में जो थे एक मोटिवेट थे हम लोग कि श्रीजेश जो हैं गोल पर, तो उम्मीद हम लोग के ऊपर था कि हम लोग इस बार मेडल ज़रूर जीत सकते हैं, और लास्ट में वही हुआ, हम लोग मेडल जीते। बिल्कुल, और क्या ज़बरदस्त प्रोत्साहन मिलता है इन भारतीय खिलाड़ियों को जब इस तरह के अवार्ड्स फंक्शन का आयोजन किया जाता है। वीरेंद्र लाखरा खुद पिछले साल प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजे गए थे हॉकी इंडिया के एनुअल अवार्ड्स में। ये दूसरा संस्करण है, याद रखिए, हॉकी इंडिया के अवार्ड्स का। एंड पहले संस्करण में क्या क्या हुआ था, व्हाट ऑल हैपेंड इन दैट फर्स्ट एडिशन फॉर द अवार्ड्स गिवन आउट फॉर 2014, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। Guests, athletes, Hockey India Executive Board members, press and media, and ladies and gentlemen, as we are about to commence the first ever Hockey India Annual Awards function. Zara zordar taaliyan ho jaye isi baat pe. Today we have gathered here to honor and celebrate the achievements of our Indian hockey players and officials who've exceeded all our expectations and brought glory to our country. Before I call upon Dr. Narendra Dhruv Batra, President Hockey India, I'd like to inform all those who are gathered here today that Hockey India has recently won the Major Dhyan Chand Award for Best Sports Federation. Ladies and gentlemen, that deserves a round of applause. Dr. Batra, please may I invite you on stage to say a few words. I want to congratulate the women's side for reaching their World League Round 3, which is Olympic qualifier. और हम सब आप पे उम्मीद रखते हैं और ये हमारी आशा है कि आप वहाँ जीतें. And first time you take a direct entry into Olympics. Thank you, Dr. Batra, who I call the main man, the driving force behind that. Zara zordar taaliyan unke liye, it's super important. He's so passionate about this. Moving on to the next category of awards is to felicitate the Milestone Awards, which represents individual achievements in the sport. Sardar Singh completed 200th international cap during the match against Australia in the Test Series Australia 2014, played at Perth on 9th November 2014. Ritu Rani completed 200th international cap during match against Poland in the finals of FIH World League Round 2, played at Delhi on the 15th of March 2015. And umpire Javed Sheikh umpired in the 100th international match during the third-fourth place playoff between Republic of Korea and Malaysia at the 17th Asian Games 2014 on the 2nd of September 2014. A big, loud round of applause for these wonderful achievers, ladies and gentlemen. Moving on to the next category of awards is to felicitate the Individual Achievement Awards. P.R. Shrijesh adjudged the Tata Steel Best Goalkeeper of the tournament during Hockey Champions Trophy held at Bhubaneswar from 6 to 14 December 2014. Akashdeep Singh adjudged MCL Best Junior Player of the tournament during Hockey Champions Trophy held at Bhubaneswar from 6 to 14 December 2014. And now for a slight change in pace. Ek aisi performance that'll mesmerize you. The Firia Wildness Duo. Zordar taaliyan.
I'm sure you haven't seen that before. Zara zordar taaliyan for the lovely Feria violinist duo. So now, ladies and gentlemen, we're moving on to the team awards and the next category of awards in recognizing the Indian men's team for winning the silver medal at the 20th Commonwealth Games 2014. Manpreet Singh. The ever-smiling Sardar Singh. We move along into the team awards, and the next category of awards is recognizing the Indian women's team for winning the World League Round 2 tournament at Delhi's Major Dhyan Chand National Stadium in March 2015, and the individual performance awards. Time to recognize these amazing women. Savita. Congratulations, girls. And now for our officials, the Director of High Performance, and he seems to be very, very popular, Roland Ultimans. And now for the top scorer of the tournament, Vandana Kataria, who get a check of 1 lakh. So now it's time for yet another performance. आपको ज़रूर चक्कर आने वाला है इस performance के बाद. Ladies and gentlemen, we present to you the amazing Egyptian Tanura dance. Next up in the team awards, and the category is recognizing the Indian junior men's team for winning the 4th Sultan of Johor Cup and individual performance awards. Harjeet Singh. And now for the player of the tournament, who will get 1 lakh and hopefully a huge round of applause from all of you, Harmanpreet Singh. Next up in the team awards, it's time to recognize the Indian women's team for bringing glory to our country by winning the bronze medal at the 17th Asian Games 2014. Deepika. Rani.
so now we move on to the final team awards for today. And the next category of awards is recognizing the Indian men's team for winning the gold medal at the 17th Asian Games 2014. What an amazing moment. And so please, time to honor the boys. Here we go. P.R. Srijesh. What I can tell you is what you're about to see now will leave you feeling like you can fly. Ladies and gentlemen, prepare to be amazed by the fantastic Power Blockers. Time to get back to the awards. I now have the pleasure in announcing the next award, the Hockey India Baljit Singh Award for Goalkeeper of the Year 2014. P.R. Srijesh. P.R. Srijesh. Zordar taaliyan. Goalkeeper of the Year. I now have pleasure in announcing the next award, the Hockey India Pargat Singh Award for Defender of the Year 2014. And the winner is Deepika. Next up, the award for Hockey India Ajit Pal Singh Award for Midfielder of the Year. And I think Best Midfielder Award goes to Manpreet Singh. Congratulations, Manpreet. So now, ladies and gentlemen, once again, time to get your feet tapping, time to make some noise.
up, time to announce the Hockey India Dhanraj Pillai Award for Forward of the Year 2014. The award goes to Akashdeep Singh. Next award, the Hockey India Asunta Lakra Upcoming Player of the Year 2014 for Women Under 21. ये अवार्ड जाता है नमिता टप्पो. Namita Topo, your Upcoming Player of the Year 2014. Next up, the Hockey India Jugraj Singh Upcoming Player of the Year 2014 for Men Under 21. Come on, guys, cheer up. Harmanpreet Singh. The next award, the Hockey India Dhruv Batra Player of the Year 2014 for Women. अवार्ड जाता वंदना कटारिया को. Amazing. Congratulations, Vandana. Player of the Year 2014 Women receives a check of 25 lakhs. The Hockey India Dhruv Batra Player of the Year 2014 Men. आप लोग किसके बारे में कह रहे थे? कौन जीतेगा? You guessed it right. वीरेंद्र लाकड़ा. Congratulations, Virendra. And now, last but not least, Hockey India Major Dhyan Chand Lifetime Achievement Award 2014. The award goes to the great centre forward Sardar Balbir Singh Senior. The men's hockey final in the 1948 Olympics, and a golden opportunity for the newly independent state of India to show its talents against Britain, the old colonial master. The undoubted star of India's team was the 24-year-old Balbir Singh. G. Singh banging it home. I am grateful for all this honor to me. I share this honor with you all sportsmen, boys and girls, hockey players. Thank you, sir. A true gentleman sharing his award with his team and his coaches, because that's what it's about. An absolute legend. Just showing you highlights of the awards function, the way it was held last year. Remember, it was the first edition. We are now heading into the second annual awards for 2015 by Hockey India. This, remember, is a proud moment. Earlier on the show, we were talking about last year's Player of the Year in the men's category, Virendra Lakra. But now, Virendra's just headed out for a quick rain check. We've got Vandana Kataria with us. In case you saw the highlights package just a few moments ago, you would have seen her smiling as she collected that trophy and award for Women's Player of the Year. She's here with us in the studio. Very warm welcome to you, Vandana. Thank you. क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पिछले 1-1.5 साल के अंदर भारतीय महिलाओं की टीम की, और ख़ास तौर पे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना 36 साल के अंतराल के बाद एक सबसे बड़ा मोमेंट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने मतलब पहले से ही बहुत मेहनत की थी, और कोचेस वगैरह मतलब इतना ज़्यादा ध्यान देते थे, और हर प्लेयर को यह था कि अभी इतने टाइम के बाद मतलब हमारा ये ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, तो इसलिए उन्होंने सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की। काफ़ी टफ परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले उस 1-1.5 साल के पीरियड के अंदर। आपने वो FIH के वर्ल्ड हॉकी लीग के अलग अलग ग्रुप स्टेज के टूर्नामेंट्स खेले, रिवर्सल्स भी हुए, बट टीम का बैलेंस बड़ा अच्छा लग रहा है। एक यंग कैप्टन है और एक एनर्जी दिख रही है भारतीय टीम में। देखिए, हमारी टीम में पूरे यंगस्टर हैं, एक 2 सीनियर प्लेयर हैं, सभी जूनियर्स प्लेयर हैं, और
एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, जैसे दीपिका ठाकुर, ऋतु रानी दी, और ये सब मतलब हम लोग को सब जूनियर्स प्लेयर्स को और जो यंगस्टर है उनको सबको साथ में लेके चलते हैं। कोई मिस्टेक या कुछ भी होती है तो उन्हें अच्छे से बताते हैं। और अनुभवी खिलाड़ी हैं, रानी रामपाल हैं आपके साथ इस टीम लाइनअप के अंदर, तो क्या किस तरह की एडवाइस मिलती रहती है, क्योंकि आप एक ज़बरदस्त फुर्तीली फॉरवर्ड अपने आप में लगातार गोल स्कोर करती रहती हैं, तो क्या एडवाइस मिलती है सीनियर्स से? जैसे रानी रामपाल है, वो साथ में पासिंग वगैरह बहुत अच्छे से करती है, और पूनम रानी, अनुराधा देवी अभी है, और ऋतु रानी मिडफील्ड, ये सब मतलब बहुत अच्छे से सब अपना अपना रोल करते हैं। आगे हम लोग स्ट्राइकर, हम लोग गोल करते हैं। आपका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है जूनियर लेवल के अंदर भी, लगातार आप परफॉर्म करते हुए आए हो। हम बात कर रहे थे जूनियर वर्ल्ड कप जो था उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही थी भारतीय वुमेन्स टीम, उस टूर्नामेंट के आप टॉप स्कोरर रहे थे भारतीय खेमे की तरफ से, ओवरऑल 3rd हाईएस्ट स्कोरर। उसी फॉर्म को सीनियर टीम के लिए रेप्लिकेट करना कितना मुश्किल रहा? हम लोग मैं जूनियर से सीनियर में मतलब खेली हूँ, जूनियर और सीनियर, अभी मतलब मेरा एज सीनियर का हो गया है। जूनियर से सीनियर में ही मतलब खेल के ही हम लोग थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस हुआ जूनियर टीम में। उसके बाद अभी सीनियर में आए तो भी एक्सपीरियंस, अभी खेलना अच्छा लगता है, इजी लगता है थोड़ा खेलना। आई एम श्योर। और इस तरह के जो अवार्ड्स फंक्शंस हैं जो आपकी प्रतिभा को सराहते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, आई थिंक देयर एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. That was Vandana Kataria. Remember, ladies and gentlemen, she was the Women's Player of the Year in the annual, first edition of the annual awards organized by Hockey India last year. Remember, we've got the 2nd edition awards live telecast just coming up. Thank you, Vandana, for joining us today. And do stay with us, ladies and gentlemen, because the stage is set and there's an air of expectation here in Bengaluru, because we're looking forward to the 2nd annual awards. Promises to be a humdinger of an affair. Welcome to the tech city of Bangalore. It's the Hockey India 2nd annual awards for 2015. Big function. You've got the who's who of Indian hockey who've congregated here in Bangalore for this very, very special moment for some of the Indian hockey players, both in the men's and the women's category. I'm Raman Banot, and really is a pleasure to be here in the city and to see some of the top Indian players here to be recognized and felicitated for their achievements of 2015. That's what we're talking about. And as I was saying, there's an air of expectancy, an air of expectation and anticipation. And that is a packed hall at the Lalit in Bangalore. Players waiting in anticipation to see the best of Indian hockey get felicitated here. It's been a strong showing over the last year as far as the men's and the women's hockey team is concerned. A medal after 33 years, remember, for the Indian men's team in an FIH event. And after 36 long years, the Indian women's hockey team qualifying for the Olympic Games, and they will be there at Rio. We've got Sophie Chaudhary in the hall. It's full of expectation. Let's see all that's transpiring there. Over to you, Sophie. Good afternoon and thank you so much, Raman. Yep, as you can see, the stage is set. The guests are here, the athletes are here. We are all set to welcome an amazing viewing audience out there to our very special awards. Good afternoon, esteemed guests, athletes, Hockey India members, executive board members, press and media. Ladies and gentlemen, as we are about to commence the Hockey India 2nd Annual Awards function. I've trained them well. Now today we have gathered here to honor and celebrate the achievements of our Indian hockey athletes and officials who have exceeded in our expectations and brought glory to our country. Now, I was very fortunate to host the first ever annual awards last year. And now that I'm back this year, I feel kind of special. In fact, I feel almost part of the family. So thank you so much for having me back here. It is indeed a very special awards, and it's going to be a wonderful afternoon. But before we kick off with the prize distribution,
How about we set the stage on fire with a very special performer? She's all the way from the Ukraine. She's a saxophonist, a composer, a tap dancer, and a singer, and she's going to play an Indian song for you, which was actually composed by my mentor and a Bangalore boy, the incredible Bidu. The song is Disco Divane, and the artist, please make some noise for Victoria Saxy.
Let's have a huge round of applause for Victoria Saxey. That's quite a cool name, I have to say. Now, esteemed guests, as mentioned earlier, this event is hosted to recognize all those who've brought a part in bringing laurels to our country. The awards function has been categorized in different sections so as to recognize the contribution of each of the athletes and officials. So our first category of awards is to felicitate the Milestone Awards, which represent individual achievements in the sport. Now, may I please request Mr. K. Govindraj, President, Karnataka Olympic Association, to come on stage and present the trophy. Ms. Mariamma Koshi, Senior Vice President, Hockey India, to come on the stage and present the check. Mr. Jagbir Singh, Olympian and Arjuna awardee, to come on stage and present the gift. Thank you so much. Good afternoon. Thank you so much for being here. All right, as we kick this off, I invite the players to come on stage and collect a trophy, a check, and a gift. And we begin with Dharamveer Singh. We can have a round of applause, a trophy and check for 50,000. He completed his 100th international cap during the match against Canada in the 24th Sultan Azlan Shah Cup, played at Ipoh, Perak, Malaysia, on the 9th of April, 2000.